Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. Today we're going to be watching and reacting to a Career247 video, this time on how Pakistan will lose Balochistan thanks to Israel. Also, slash Pakistan's direct message to Trump. I'm assuming the direct message to Trump has to do with the whole Nobel Peace Prize shenanigans and Pakistan's meeting with Donald Trump in Washington, D.C., which we all know that's just the dog going back to the master, isn't it? The lap dog of Pakistan does what the master wants. Or I guess. uh it's just so annoying, guys. It's so annoying. Because I can see the issues with Pakistan themselves, but apparently I'm okay. I'm certain my government of the USA sees the issues as well, but they're choosing to ignore these issues just because it's more of a convenience for them to utilize them as a platform to attack other parts of the Middle East. Who do we have to blame for this? George W. Bush? Is it George W. Bush? Does it go all the way back to the first Bush? The second Bush? It's annoying. It's annoying. It's annoying. It's annoying. It goes back even further, honestly. But yeah, we're going to go ahead and watch this. The link to this video will be in the description down below, ladies and gentlemen. So please, 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 please go and check it out. Also, remember code PD10 for maximum discount, by the way. Maximum discount. Very cool. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं Welcome, प्रशांत welcome, नाउ everyone. जब से आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई है, उसके बाद बहुत सारी डिटेल सामने आई है। पहले तो मैंने एक बात नोट करी है, अफगानिस्तान के लोग आज के समय जो पाकिस्तान की सरकार और उनकी मिलिट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैंने आज तक ऐसा क्रिटिसिज्म शायद भारतीयों की तरफ से भी नहीं देखा होगा। कई अफगानिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया पर, इस फोटो में आप The देख पाओगे, greatest betrayer of Islam is the government of Pakistan. Look at that. Look at George W. Bush. कोलाज है इमेजेस का कि किस तरीके से ओवर द इयर्स पाकिस्तान का जो भी आर्मी जनरल रहा हो, राहिल शरीफ, बाजवा, उससे पहले मुशर्रफ, सब लोग इनडायरेक्टली यूएस के लिए काम कर रहे थे और इनके बहुत सारे एसेट्स भी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेंगे, प्राइमरली यूएस और यूके में। और इसलिए कई अफगानिस्तान के लोगों ने ये लिख दिया कि द ग्रेटेस्ट बिट्रेयर ऑफ इस्लाम इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अभी रिसेंटली आसिम मुनीर जो मिलके आए हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से, इसमें ये बात तो As U.S. eyes its airspace, Pakistan confirms Trump and Munir, Asif Manure, had discussions on Iran. In a statement on Thursday, Pakistan Army said detailed exchange of views also took place on the prevailing tensions between Iran and Israel, with both leaders emphasizing the importance of resolution of the conflict. Basically, what Asim Munir is trying to say here is he's trying to make it seem more self-important when honestly Donald Trump was probably like, hey, we're going to utilize your bases on our attack against Iran and you're not going to say anything about it. And he was all like, okay, yeah, sure, master, whatever, keep giving us money to fund terrorist encampments. That's basically what he said, right? तो कंफर्म है कि यूएसए चाहता है पाकिस्तान का एयर स्पेस, इनके मिलिट्री बेसिस। यूएस आने वाले हफ्तों में ईरान में जो भी करना चाहता है उसमें पाकिस्तान का पूर्ण सहयोग चाहता है। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं मगर यूएस करना क्या चाहता है, देखिए यूएस मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ भी देख रहे हैं। इसकी एक वीडियो रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, मेरे हिसाब से ये अब तक की। Now, in response to this, I don't think they're laying it off. I think it'd be pretty stupid to send a tactical nuclear weapon when we do have bunker busters that can take out these deeper nuclear enrichment facilities in Iran. And do I think the U.S. needs to do this? Possibly. There's been a lot of deep earthquakes in Iran recently, in the center of Iran. And that usually denotes nuclear weapons testing. So, do I think Iran is close to nuclear weapons? Yes. Is that an issue? You know what? Most of the world thinks it's an issue. So, I don't know if it's necessarily on me to say that or not. You know what? No. I take that back. I do think it's an issue if Iran has nuclear weapons.
But does that warrant a preemptive nuclear strike? No, I don't think so. इस सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूएस यूज कर सकता है, ताकि ईरान की जो भी तरक्की हुई थी सेंट्रीफ्यूजेस की, यूरेनियम एनरिचमेंट की, सब कुछ ये डिस्ट्रॉय कर दे। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिएगा, इधर आप देख पाओगे इस वीडियो में। The Guardian reported Trump was getting cold feet, worried about the effectiveness of bunker busters and not willing to use tactical nukes. But the White House tells Fox that's not true. Everything's on the table, even tactical nukes. The big Everything, everything in a time of war should be on the table for every country. I think it would be silly not to utilize or even think about utilizing an arsenal that you have. But I do think there are a lot of people in the military, in the government, that would not allow a preemptive nuclear strike. So I don't think, personally, I don't think the anyone has to worry about the US using a nuclear bomb against Iran. ना यहाँ पे आपको समझना होगा, ये कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूएस के हिसाब से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं ये अंडरग्राउंड है, तो वहां पर हिट करने के लिए ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स का यूज कर सकते हैं, जिसको लेकर ये 100% श्योर है नहीं कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। और इसलिए बात चल Well, they already know. They already know that the depth of the facilities would require multiple bunker buster bombs to land precisely in a specific spot over and over again. They're talking like 2, 3, 4 precise bunker buster bomb shots, which in of itself is pretty difficult to do. And I think that's the only reason nuclear weapons are even on the table. रही है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साफ कर दी है, ये नहीं चाहते कि अमेरिकन सोल्जर्स ये ईरान में खुद जाएं, खुद सब कुछ डिस्ट्रॉय करें। दे डू नॉट वांट अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड। तो इसलिए घूम फिरकर एक सोल्यूशन ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, एक छोटे न्यूक्लियर वेपन में देख लेना हो गया। देखो, जब मैं ये न्यूज डिलीवर करता हूं, जब मैं आपको पर्सपेक्टिव बताता हूं अमेरिकन मीडिया का, कुछ पाकिस्तानी है वो गुस्सा होकर मुझ पर बरस पड़ते हैं कि देखो ये सब मैं नहीं कर रहा। अगर दिमाग में थोड़ा ये बात घुस रही है, मैं बस जो हो रहा है ना आपको बता रहा हूं। मैं ट्रंप नहीं हूं, मैं डिसीजन नहीं लेता। आई एम जस्ट टेलिंग ऑल ऑफ यू कि यहां पर हो क्या रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान कहीं Spooked Assam Manure confides in Trump his fears of Balak uprising amid Israel-Iran conflict. Oh, this is News 18. I started looking into this News 18, and it doesn't have very good marks for like validity of stories and whatnot. So I am particularly wary of News 18 articles. We would need to, I don't know, I personally would need to double check and cross reference News 18 articles with other articles going forward, just based off of some of the research that I've done. But I mean, this seems pretty clear. A Balochistan uprising has always been in the books. कहीं से भी इस सब में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लिए ये सब एक बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है कि यूएस अटैक करेगा यहाँ पे ईरान को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना होगा। जिस तरीके से जब यूएसए ने अफगानिस्तान को अटैक किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ा था। अभी देखिए, आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बात साफ साफ बता दी है कि बलूचिस्तान में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल भी सकता है अगर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इसी तरीके से चलती रहती है। क्योंकि आपको समझना होगा, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, जब हम लोग बोलते हैं ना बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान एक टाइम पर यह पूरा रीजन हुआ करता था, जो आज के समय बढ़ चुका है। थोड़ा सा बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है, बहुत सारा बलूचिस्तान ईरान में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है। अगर मैं कहूं बलूच लोगों को खुद का एक देश मिले ना, तो उसमें पाकिस्तान Typical British, just cutting things in half and not caring about, you know, traditional areas of the people. की धरती जाएगी, ये अफगानिस्तान का थोड़ा सा साउथ का एरिया जाएगा, और ईरान का बहुत सारा एरिया चला जाएगा, तो बनेगा एक बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं आज के समय, जो चाहते हैं एक बलूचिस्तान नाम का देश बने फिर से, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, वो लोग काफी बार इसी टाइप के कंट्री की बात कर रहे होते हैं ना। आसिफ मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ कह दिया है, अगर ईरान की मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ईरान में तख्ता पलट ये लोग ला देते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है ईरान में,
उस केस में ना बहुत सारे ग्रुप्स बलूच मिलिटेंट्स जो आज के समय ईरान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ये ईरान के बलूचिस्तान में कब्जा कर सकते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहां पर भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसके बाद और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगी क्योंकि वहां पर क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी हो रही होगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान में है उनको ईरान की साइड से बड़ा सपोर्ट मिल रहा होगा बलूच मिलिटेंट्स का। और जहां तक मैं यूएस के एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स देख पा रहा हूं, व्लॉग देख पा रहा हूं, यूएसए को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को पकड़ के रख पाता या नहीं रख पाता। दे डू नॉट केयर। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज दिख रही है, Yeah, उनकी they लेगेसी। 100% don't care. They 100% do not care about it. मैंने क्या कहा है, उनकी लेगेसी। ट्रंप को यह बताया कि ये मोस्ट प्रोबेबली उनकी आखिरी टर्म है, इसके बाद फिर से प्रेसिडेंट बन। Well, it's not most likely his last term. It is his last term. I don't know if this is a translation error with Google, but it is his last term. You can only be president for 2 terms in the United States. So unless some massive regime change or like huge change in our constitution happens, there can only be 2 presidents. But I don't know. We'll see what happens. I know he was some of his devout followers were saying they could change the Constitution back to allowing 3 presidents because it used to be the case 100 years ago, right? And if that happens, we could have Obama versus Trump. That'd be something. That would be fun to see. बनने का प्रोसेस बहुत ही जटिल है। कहते हैं कि वो ट्राई मारेंगे, बट अगेन मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद तीसरी बार वो प्रेसिडेंट बन पाएंगे क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता नहीं है और ये संविधान में लगता नहीं है कि चेंज कर पाएंगे आफ्टर मिड टर्म इलेक्शन। तो ट्रंप को ये पता है कि आने वाली कई पीढ़ियां ट्रंप को जो जज करेगी, जैसे देखेगी, उसमें ट्रंप का ये वाला जो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है ना, ईरान वाला, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्या ट्रंप वो प्रेसिडेंट होंगे जो हैरी ट्रूमैन के बाद कई दशकों बाद पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे फॉरेन सॉइल पर? और मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही ट्रंप एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड ड्रॉप करते हैं ईरान पर, या फिर मैं कहता हूं ईरान को टॉपल कर देते हैं, सरकार यहां की गिरा देते हैं, उसके बाद हमको पता नहीं कौन सा नया ईरान सामने आएगा। ये जो यूएसए के एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये लीबिया में बड़े खराब गए हैं। इराक में आप सबको याद होगा एक बार को आईसिस खड़ा हो गया था। तो अभी ईरान में जो यूएस करने वाला है, उसके बाद कौन सा नया ईरान सामने आएगा, वी डू नॉट नो, एनीथिंग कैन हैपन। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं। इन्होंने कहा मुझे 2 हफ्ते और चाहिए, मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं, देख रहा हूं। He said needs 2 more weeks. He'll probably make a decision by this weekend. By the time of the recording of this, I guess it's technically the weekend. It's June 21st at the time of me recording this. It'll be the next couple days. I mean, we have a whole fleet of naval warships in and around the area as it stands, and we've been constantly sending planes and stuff out towards that area. If something's going to happen, it's going to happen in the next couple days. क्या हो सकता है? ट्रंप की भी उम्मीद यहां पर यही है, सीज फायर हो जाए, ये मुसीबत मेरे बाद जो अगला प्रेसिडेंट है वो संभाले, ये सारे मुश्किल लड़ने I don't think there's going to be a ceasefire. Iran's already come out and made multiple statements that they'll never do a ceasefire. को लड़ने पड़ रहे हैं। बट आसिम मुनीर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी हेल्प तो हम कर देंगे, जो आप पैसा दे रहे हो वो भी हम ले लेंगे, मगर इस सब में देख लीजिएगा बलूचिस्तान में कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम बाद में संभाल ना पाए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं, अगर पूरी दुनिया के ही जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, पूरी दुनिया का ही मीडिया खुलकर लिख रहा है, अगेन आजकल लोग जर्मनी की बड़ी सुनते हैं, तो जर्मनी का जो मीडिया है DW न्यूज, वहां पर भी आप अगर देखो तो ये भी ओपनली कह रहे हैं कि हाउ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। I mean, yeah. I mean, it 100% could. And you know what? I'm for it. I'm for the destabilization of Pakistan. If Balochistan, okay, here, listen. If Balochistan were able to break away from Pakistan, China would have lost all interest in Pakistan. The only reason China wants anything to do with Pakistan as it stands is because of their Belt and Road Initiative to build, this system, this road network, through Pakistan out into the Balochistan area to that port that they're building in Balochistan, right? If Balochistan were to separate from Pakistan, China would drop Pakistan so quickly. Oh my goodness, you wouldn't have it. It would be just they'll be done. They'll throw them out the window. They'll be done.
पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होने वाला है। क्वेश्चन ये है, ऐसे टाइम में भारत के सामने कुछ अवसर खुलेगा नहीं। इस पर्टिकुलर केस में देखिए, अगर हम कुछ करते हैं, यूएस लिटरली पाकिस्तान के बचाव में आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक डीप मिलिट्री अलायंस, एक मैं कहूंगा अनऑफिशियल मिलिट्री अलायंस ईरान के अगेंस्ट फॉर्म हो चुकी है, यूएस और पाकिस्तान की। तो उस केस में इंडिया मुझे लगता नहीं है कुछ करने वाला है। बट अगेन मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, हमें अपनी बॉर्डर्स पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा आने वाले 10 सालों तक, क्योंकि जैसे ही ईरान गिरता है और उसके बाद जो ईरान के साथ इनकी बॉर्डर है वहां पर डिस्टेबलाइजिंग एक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो लार्ज स्केल मिलिटेंट्स खड़े होंगे, पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ सकता है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि पूरे रीजन पे हो। सो अगेन बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। आप देखोगे बलूचिस्तान कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों में। मैं बस वेट कर रहा हूं कि ट्रंप कब अपना निर्णय ले लेते हैं। ये ट्रंप अभी जो ये सोच विचार में डूबे हुए हैं, कब ट्रंप फाइनली कहते हैं ओके लेट्स डू दिस। इतिहास ठीक है, मुझको ऐसे याद रखेगा, मेरे सामने यही ऑप्शन थे, मुझे ये करना पड़ा। सो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट आती है इन द फ्यूचर में, आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है, अगर आज के समय आप Oh man, it's a lot to think about, man. It's a very contentious thing. It's a very, 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 very contentious situation. We'll see what happens. We'll see what happens, guys. PD10 to get maximum discount, everybody. Use code PD10 for maximum discount. I'm going to read some of these comments. I'm curious to see what some of the comments say. Stand with Balochistan. Yeah, I agree. Stand with Balochistan. Original blue Harpic. Red, I don't know what Harpic means. Justice for Aisha, 6 years old. She didn't get justice even after 1,400 years. I'm gonna have to get more context on that. The name is not, the name and the time frame isn't jumping to me. What is this about Dhruv Rathi? A way to lap up Dhruv Rathi was quite casual. What, when he was talking about the DW Germany stuff? Yeah. DW News. I listen to a lot of German Shepherd Target. Sir, please, militants did not say freedom fighters, no German Shepherd harmed. Because of India, I stand with Balochistan. As an Indian, I support Israel. Dhruv Rathi. Whatever money you give us, we will take it too. If anyone have doubt on foreign diplomatic achievements of India, here it is. India's strategic ties have deepened via defense deals like GE jet engine tech transfer and joint military exercise. Okay. France is India's largest defense partner in Europe. True. Despite global pressure, India maintains strong ties with Russia. Very true. Japan is investing in India's infrastructure, including the Mumbai-Ahmedabad bullet train. True. Defense cooperation is robust. India imports drones, missiles, radars with Israel. Very true. No Dhruv Rathi harmed. We, the people of Balochistan, are with India, and besides, Pakistan has already called us Indian. Now the people... What? Have they? Have they really? Finally, geopolitics explained like a spicy Netflix drama, maps, theater, AI dinner diplomacy, Republic of Balochistan in the making. Person who falsely claims that he has stopped the nuclear war being happened and seeking option to use nuclear weapon somewhere. Once a Nobel Prize seeker person. Again, I don't honestly think he's gonna. It would be a very strategic mistake politically if he were to use a nuclear weapon here. I don't think it's gonna happen. I really, really don't think it's gonna happen. Whenever the news comes, it feels good to hear it. As an Indian, I stand with Balochistan. Balochistan should be a republic. That doesn't translate. That's fair. Every Indian wants Balochistan to become a separate country. I think it'd be better off. Because right now, the Balochistan people are mistreated by Pakistan. They really are. And they're mistreated by the Chinese workers that are imported to build the port and the roads and whatnot, the infrastructure. China will also love Pakistan soon. Wait, just be patient.
again, if Balochistan gets separated from Pakistan, China will have nothing to do with Pakistan. They'll drop them so quick. So quick. All right. Well, the Afghan army is fighting against Taliban along with the U.S. Army. Today, those Afghans are under the watch of the American enemies. There are a lot of burning sensation due to PD. Asin Manure is busy eating pork biryani. Can he eat pork? I don't think he can eat pork, right? Can Muslims eat pork? I think that's one of the things that it's like Muslims and Jews can't eat pork, right? I don't know. I don't know a bunch about, the religious rules and laws. As an Indian, I'm worried about U.S. using nukes and putting many people at risk. U.S. is an irresponsible country. Again, I don't think we're going to use nukes. All right. Well, I guess we'll take a little dip into the new comments here. Just a quick little dip into the new, see what happens. Upload 3 videos at least daily. Wow. Bro is really biased. How much Modi and followers have licked the dust. Now PD is lost. He cannot be that anti-Pakistan. Free Kashmir. You already assume Iran will collapse based on the history. They won't give up. Please add other side perspective also. They're not giving up. They've said they're not going to give up. There's not going to be a ceasefire. Iran has specifically came out and stated there will not be a ceasefire and they will respond in kind. Also, some very, 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 very suspicious earthquakes are happening deep in Iran, all right? And the only thing I can think of, and it's the only thing that a lot of people can think of, by the way, these earthquakes are caused by their nuclear tests. I think they will have a nuclear weapon, and if anyone uses a nuclear weapon, it will be Iran, and it will be on top of Israel. Okay. I really want an answer or video from your side that is really India's foreign policy is a disaster. What does he mean by that? Spreading everything fake. Listen, Balochistan have 50+% population, Pashtun population, so he didn't even know this? What? PD trying to hide the humiliation of PM and FM of India. They say we stop the war, let their, whatever that is, Mr. Donald Trump, I've stopped the war. What a humiliation. Couldn't even read that. The question is, if U.S. can do it, why not Russia on Ukraine? You don't want people to use nuclear weapons. It's on the table for a last-ditch effort. All right? There's a reason it's only happened one time, and that was to end freaking World War II. Japan would never, if the nuclear weapons were not dropped on Japan, Japan would never have stopped the war. They would have continuously fought over and over and over again. And people don't know the atrocities that Japan did. People talk about, the Jewish Holocaust. Why don't people talk about the 20 million Chinese people that the Japanese killed? Japan, over the course of World War II, potentially killed 30 million people. And let's not even, I probably can't even say it on YouTube because YouTube will block me. What other horrific atrocities they were doing all across Asia. The nukes being dropped were tactical. The tactical nuke. They were a tactical weapon used to finally put an end to World War II. Without it, it would have dragged on a lot longer. All right, guys. If U.S. will use nukes, then Russia will also say, why will I stop from using nukes? The U.S. won't use a nuke. If anybody uses a nuke, it's probably going to be Iran. So, thank you for watching. Link to the video will be in the description down below. I'll catch you on the next one, yeah? Take care. Goodbye.